अभी उठा हूँ, दोपहर के 2 बजे हैं और मैं सुबह वॉक पर भी नहीं गया। और वॉक पर मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि सुबह बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। सो उठते साथ ही मैंने कपड़े चेंज किए और साथ ही शॉपिंग में चला गया क्योंकि सुबह ईद है और मैंने अभी तक कुछ बाय नहीं किया। सुबह से कुछ खाया ही नहीं था, तो सबसे पहले हम गए जलाल सन्स। कैमरामैन ज़ीशान के साथ 120 FPS। मेरे ब्लॉग में 500 व्यूज़ होने के में तला भाई मैं जलालसंस लेके आए हैं। तला भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? बस इंशाल्लाह हमने बहुत आगे जाना है, अभी अपनी लीग में आना है इंशाल्लाह हमने। इंशाल्लाह जलाल सन के पास ही मैकडॉनल्ड था, तो ड्राइव थ्रू से हमें आइसक्रीम मिली। कितनी वनीला फोन? 2 2 वनीला फोन। जी, थैंक यू। उसके बाद हम गए अजील पर, और क्या है कोई कमाल की शॉप थी वो। सो वंस अगेन कैमरामैन ज़ीशान के साथ 120 FPS। सो अजील से चॉकलेट्स लेने के बाद हम गए जे डॉट पर, यही थे कुर्ते लेने थे। सो जे डॉट ज़ीशान 120 FPS। सो फिर हमें ग्रॉसरीज चाहिए थी थोड़ी सी, तो फिर हम गए अल-फतेह। सो अल-फतेह में मैं फ्रूट के शॉर्ट्स ले आया था, तो एक वॉलंटियर मेरे पास आया और कहने लगा सर कभी आप सुबह आते तो क्या ही कमाल शॉर्ट्स आते, क्योंकि डेकोरेशन बड़ी अच्छी हुई थी। मैंने कहा चलो ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम सुबह आऊँगा। मैं थोड़ी सी आगे गया हूँ और ग्रॉसरीज के शॉर्ट्स लेने लगा, और दूसरा वॉलंटियर मेरे पास आया और कहने लगा सर यहाँ कैमरा लो नहीं है। यानी पहले वाला कह रहा था कि सुबह आते और अच्छा भी हुआ था, दूसरे वाला कह रहा है कैमरा लो नहीं है।
सो अल-फतेह, व्हाट इज़ या सो अल-फतेह से ग्रॉसरी खरीदने के बाद हमने दूसरे ब्रांड से शॉपिंग की और ट्रैफिक जैम की वजह से कोई 11 बजे घर पहुँचे और मैं इतना थक गया कि मैं आते साथ ही सो गया। एक बात तो कहना भूल ही गया, ईद मुबारक। चला भाई पानी भरने के लिए पानी भरने के लिए अल-फतेह आया।